the right way to regulate it. ऐसे में government has taken the right first step by treating the online gaming apps and websites as intermediaries and brought them under the first step of regulation under the Intermediaries Act. I think that's a very good first step. And as we create more consensus with the state governments, as I've said, I think that yes, we should have a central law on this, and the regulation has to be very strict because the society is impacted by addiction to online games and especially by online gambling. T. Sumidhi. Thank you very much, Speaker, sir. As has been rightly pointed out by the Union Minister that there should be consensus with the state government, I would like to draw an attention. Sir, the Tamil Nadu Prohibition, Online Gambling and Regulation of Online Games Bill 2022 stays with the present Governor, Honorable Thiru R.N. Ravi, awaiting assent. Over 40 youths have died so far in Tamil Nadu since the gaming ban bill was not passed in Assembly, but waiting for the assent. Now, my question is, how does the government propose to ensure that the bill actually ends up seeing the light of the day? Does it also intend to ensure that other states also bring up their own legislations until the common legislation is brought forth by the union government? Thank you. Honorable Speaker, sir, already 19 states and UTs have passed their own laws. 17 states have actually amended the Public Gambling Act and introduced the online gambling elements within that Public Gambling Act. If there is something which is happening in a particular state, I don't think this House should be commenting on that. We should, what my point is that we as very responsible lawmakers should come with a consensus, and we should then have a central act which basically has been created, has been drafted in consultation with everybody, and that central act should be effectively regulating the online games and online gambling. क्वेश्चन नंबर 93 क्लब किया जाता है श्री के मुरलीधरन. माननीय मंत्री जी. Table of the House. Agrees. We are ready to make a central law. Sir, this law, online gaming process, is a threat to the humanity, sir. Even yesterday, in my state, Kerala, one lab assistant was committed suicide only because he lost everything for this online gaming. So, I request the Honorable Minister, whether the central government should introduce a central law to control on this online gaming in all over India. Honorable Speaker, sir, yes, the central government is very seriously concerned about the impact of online gaming and gambling on the society. And as I've mentioned, since this is a very complex legal issue on which all the lawyers are grappling what is the right way to regulate it, as we have consensus with the state governments, definitely I believe that central government should come up with a proper law, and there has to be very, sir, this is part of the list 2 state list. I've said it in very long detail, sir. You are also very, you understand law. So it's very important that we create that consensus and then we come to the parliament, sir. Honorable member Sri Beni Benan. Question number 84. Dr. Srikanth. Question number 84. Statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सबसे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस वर्ष के बजट में महाराष्ट्र को रेलवे में 13,530 करोड़ रुपए आपने दिए हैं. हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन, जो मॉडल रेलवे स्टेशन है, वो बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं. लेकिन ये करते वक्त, और मुझे लगता है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी लॉन्च की गई है सरकार के माध्यम से, लेकिन ये स्टेशन रीडेवलपमेंट करते समय बहुत सारे जगह पर जो है, मतलब मुंबई और सबर्बन में
स्टेशन के आजू बाजू का जो परिसर है वहां पर अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां है, स्लम्स है, वो बहुत सालों से वहां पर रह रही है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वहां पर उनका इविक्शन के लिए रेलवे के माध्यम से आए दिन नोटिस जो है लोगों को दिया जा रहा है। और इन अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स के कारण हम जो करना चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एक्सेस, सर्कुलेटिंग एरिया, टॉयलेट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ बिल्डिंग, ये सब जो है हम कर नहीं पा रहे। तो मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि आज जो हम नोटिस लोगों को दे रही है, जो है मुंबई में और सबअर्बन रीजन में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों लोग जो है रेलवे की जगह पर रहते हैं, तो इनको एक दिन में हम निकाल नहीं पाएंगे और स्टेशन एरिया भी डेवलप हम कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे राज्य सरकार की SRA पॉलिसी है, स्कीम है, जहां पर जो है वहां पर लोगों को, जो स्लम्स के लोगों को जो है मुफ्त में घर जो है वो बना के वहां पर देते हैं। आज रेलवे की जगह बहुत बड़े पैमाने पर एनक्रोच्ड हुई है मुंबई और सबअर्बन में। आज राज्य सरकार के पास उतनी जगह नहीं है खुद की कि वो उनकी जगह दे और वहां पर रिहेबिलिटेट करे। तो इसमें से एक मध्य मार्ग जो है मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार निकालना बहुत जरूरी है, जिससे इन लोगों को भी रिहेबिलिटेट हम कर पाए और हम जो स्टेशन एरिया रीडेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ये हम सोच रहे वो बड़े पैमाने पर हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुंबई और सबअर्बन रीजन के बहुत सारे MPs यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरा सरकार से प्रश्न है कि सरकार इस रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ सोच रही है क्या? महोदय, रेलवे स्टेशन करीब करीब देश में 1200 के आसपास रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास चल रहा है और बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है। उसमें प्रॉपर एक मास्टर प्लान बन रहा है जिसमें आगे के कम से कम 50 वर्षों के लिए बेस बने, इस तरह की एक प्लानिंग चल रही है। और जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, करीब करीब के प्रत्येक स्टेशन में राज्य सरकार के साथ बहुत ही डिटेल चर्चा होके अगर प्लान बनना है तो प्लान में अप्रूवल्स जो भी म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका लगता है। तो करीब करीब हर जगह राज्य सरकार के साथ मिलके ही डेवलपमेंट हो रहा है और हर एक एलिमेंट जहां पर भी ह्यूमन इम्पैक्ट आ रहा है वहां पर भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही एक ह्यूमेन व्यू के साथ डेवलपमेंट को आगे लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था सर, कि रिहेबिलिटेशन जो है इन हजारों लाखों लोगों का करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी सरकार बना रही है क्या? मेरा अगला प्रश्न है, सरकार मेरे लोकसभा क्षेत्र में RLDA के माध्यम से कल्याण और ठाकुरली स्टेशन का रिडेवलपमेंट कर रही है, MRVC के माध्यम से डोंबिवली का कर रही है और अमृत भारत के माध्यम से दीवा और शहाड़। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। लेकिन कोई टाइम फ्रेम जो है सरकार ने सोची है क्या ये लक्ष्य पूरा करने का? और उसी के साथ में मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सभी स्टेशन के डेवलपमेंट का काम करते वक्त यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सरकार लगा रही है। क्या सरकार PPP मॉडल से इनको रीडेवलप करने का कुछ प्रावधान करेगी जिससे ये स्टेशंस को बेहतर ढंग से मोनिटाइज या कमर्शियलाइज भी किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और स्टेशन अनलाइक मैनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन उससे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ट्रेन चलती हुई ट्रेन माने स्टेशन ऑपरेटिंग स्टेशन के टाइम में उसको रीडेवलप करना है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया है दैट एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस, 1200 में से करीब करीब 1190 के आसपास स्टेशन गवर्नमेंट के अपने फंड से ही रीडेवलप किए जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट का ही फंड लग रहा है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक तो ये, दूसरा रेलवे की अपनी खुद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है और रेलवे का जो स्ट्रैटेजिक नेचर है, इस स्ट्रैटेजिक नेचर में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर स्टेप लिया है, बहुत क्लियर डिसीजन लिया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के फंड से ही किया जा रहा है। सुजय विखे पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इससे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर में
रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम में शामिल किया है। इससे काफी सालों से मांग है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो सोलापुर डिवीजन में आता है उसे पूना डिवीजन में शिफ्ट किया जाए, ताकि अहमदनगर से पूना की जो डेमू ट्रेन की मांग है, जिससे कि नगर के युवकों को रोजगार निर्माण हो और कनेक्टिविटी बढ़े। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत अहमदनगर रेलवे स्टेशन के बेहतर रीडेवलपमेंट के लिए उसे पूना डिवीजन में ट्रांसफर करने की कोई कार्रवाई की है क्या? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेसिफिक स्टेशन 1275 में से एक स्टेशन मैं लिस्ट देख के माननीय सांसद महोदय अगर कभी भी मेरे पास आए तो बता सकते हैं, लेकिन सर 84, 86 और 80 और 99 तीनों क्वेश्चन एक ही विषय पे हैं, अगर आप उचित समझे। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। मेरा माननीय रेल मंत्री से प्रश्न नहीं, मांग है। जनहित और रेलवे के हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, जो मथुरा से अलीगढ़ के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्शन के विषय में है, जिसके लिए आप बजट का भी एलोकेशन करके इस काम को जल्दी से शुरू किया जाए। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मथुरा से अलीगढ़ के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी का होना स्थानीय लोगों तथा ब्रज क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों की मांग के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी और प्रॉफिट दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बरेली रूट में मेंदू में कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है। कई प्रयासों के बाद भी ये नहीं हुआ है, तो मेरी मांग है इसे जल्द से जल्द किया जाए। थैंक यू। सर जो मांग है वो नोट की गई। सर अहमदनगर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में इंक्लूडेड है। श्री आई बी ईडन। Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to thank the Government of India and the Ministry of Railways for selecting 3 major railway stations in Kerala as model railway stations. One is the Ernakulam Junction, second is the Ernakulam Town, and third is the Koilon railway station, sir. Sir, 444 crore rupees is allocated, is the outlay for the Ernakulam Junction railway station. 225 crores is the outlay for the Ernakulam Town railway station. Sir, my humble request and question to you is, the development work has been inaugurated by the Honorable Prime Minister, but the construction work is at a very slow phase. So would there be intervention from the Government of India to make sure that the work is expedited, finished on time frame? Would there be facilities for women differently abled and also transgender, sir? Sir, women need special waiting arenas as well in this project. The design is very exquisite. I would also like to ask that when you consider both these railway stations, which is at a very stagnant position, no new trains can be allotted. There is 100 acres of land with the railways inside the city, which would be the first of its kind in India, where the metro rail, water metro, and the mobility hub can be connected, where a new central railway station in the marshalling yard of Punnurundi can be renovated, new trains can be started, a new terminal can be started from this particular station. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैं इंग्लिश में जवाब देना चाहूंगा। The way all the stations are being designed, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji gave a very clear vision on the design of stations. In fact, his view was that stations should be actually be integrating both sides of the city first. Second, a new urban space should be created at these stations. Third, all the modes of transportation, as Honorable Member has very rightly pointed out, they should all be integrated with the railway station when we do the redevelopment. And all these elements of design have been kept in mind when we are taking up all these stations. One of the key points is there is a lot of pre-work which has to be done when we are constructing when we are redeveloping a station. What is that pre-work? That pre-work is because the railway has to continue to function. So all the signaling cables, all the control systems, they have to be first shifted and made operational. Then only we can start the actual physical construction work. I mean, it's a technical point, but it's a very important point. So what Honorable Member is saying,
please expedite. Yes, we are rapidly moving in the construction, but what we are always keeping in mind is that the train operation should not be disrupted by the redevelopment. Mostly, sir, this kind of activity in the developed countries, generally a project of this complexity, let's say in a European country, would take something like 4 to 6 years. We are targeting completion within 2 to 3 years of each of these projects. इस पर सारी डिबेट प्राइवेट बिल पर डिबेट है, इसकी संकल्प पर भी उस समय चर्चा कर लेना, अभी डिटेल में क्या प्रश्न होना। क्वेश्चन नंबर 86 और 99 को क्लब करते हैं। पहले 86 टीआर पारीवेंदर। 85 है सर 86 को क्लब किया। हाँ, आपका भी लेंगे। 86 Question number 86, sir. Honorable member. Honorable Speaker, sir. Tamil Nadu has received a railway budget allocation of 6,080 crores for the various projects in 23-24. This is 57% higher than the allocation of the previous year. Even in this budget, also my Perambalur constituency, laying new railway line from Ariyalur to Namakkal via Perambalur and Thurayur is not included. This is a 50 years dream of my constituency people since from independence. I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, when this proposal will be considered, at least in this Amit Kal, Ministry and Railway Board should consider it positively. Honorable Speaker, sir, although the question relates to stations, an honorable member has asked about a particular project, and I'm aware of that project. Honorable member has discussed that project with me in good detail. We can discuss it whenever you come to the office in what is the progress. What I would like to say, Honorable Speaker, sir, is that Honorable Prime Minister has given a record allocation to railways because he has an emotional connect with the railways, and as a result, most of the states have got very good allocations this year, and I'm very happy to share that Tamil Nadu state, the state of Tamil Nadu has got a record allocation this year at 6,080 crore rupees. So this is a great thing. We should now go beyond politics and make sure that the state and center collaborate and the progress of the projects is fast, because there is a lot of scope within the state government's scope, land acquisition, law and order support, all those things will have to come from the state government support. So I request that this is the time when Honorable Prime Minister's vision of transforming railways can actually be achieved. My supplementary too, sir. I request the Honorable Minister to give stoppage of Guruvayur and Mangur Express at Lalgudi railway station in my Perambalur constituency. Will the request be considered? The matter of stoppages is something very serious. It's of course not connected with the station. Honorable member can meet me and we can discuss it separately. सर, सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बार पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों को बहुत धनराशि दी है, 9 गुना बढ़ा दिया। महोदय, मैं इस बार रेल बजट को देख रहा था तो बिहार को राशि मिली है, नो डाउट, और आपने बिहार राज्य में अमृत भारत स्टेशन के तहत जो योजना ली गई है उसमें कुल 86 स्टेशन का चयन किया है।
मगर मुझे लगा, राम कृपाल जी शॉर्ट में पूछे। मैं शॉर्ट में पूछ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, कुछ लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ। मुझे लगा कि हमारे इलाके में भी इतने बड़े राशि का कुछ अंश मिलेगा, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर, मैंने मंत्री जी से लगातार कई बार मिला भी। मेरे इलाके में जो स्टेशनों का चयन किया गया है, बहुत सारा लंबा स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशन हैं, जिसमें दानापुर, बिहटा, सदीसोपुर, फुलवारी शरीफ, पुनपुन और कई अन्य स्टेशन है, मगर मात्र इस तरेगना स्टेशन का चयन किया गया। दूसरी बात है, बहुत दिनों से, आजादी के बाद से ही लंबे अरसों से, मैं आ रहा हूं सर, प्रश्न पूछो ना, मैं प्रश्न ही तो आ रहा हूं पूछने के लिए। लंबे अरसों से वहां पर 4 लोकसभा को प्रभावित करने वाला, जनता को असर डालने वाला बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन, इसमें आपने राशि दी है, मात्र 20 करोड़ रुपए की राशि दी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जो स्टेशन छूट गए हैं, उन स्टेशनों पर आप गौर करेंगे, अमृत भारत स्टेशन में जोड़ने का काम करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और दूसरा, बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन, जिसकी स्वीकृति आपने पहले से ही दे रखा है, 20 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 3 स्टेशन का बहुत सीरियस जब डेवलपमेंट हुआ, गांधीनगर कैपिटल, रानी कमलापति और विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर में, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे स्टेशंस को लिया गया है और ये प्रोग्राम स्टेशन डेवलपमेंट का अब रैपिडली स्केल अप किया गया है। उसके तहत करीब करीब 200 बड़े स्टेशन हैं और टोटल अगर हम देखें तो 1275 सारे स्टेशन मिला के हैं। और जिस तरह से काम आगे बढ़ेगा और भी नए स्टेशन इसी लिस्ट में आगे इंक्लूड होते जाएंगे और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की माननीय सांसद महोदय ने कहा है, मैं बिहार सरकार, आपके माध्यम से बिहार सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण में सहयोग अगर मिलेगा तो जरूर उसमें हर एक प्रोजेक्ट में और भी फंड रिवाइज्ड एस्टिमेट के टाइम में अधिक दिए जा सकते हैं। बहुत सारी डिपेंडेंस राज्य सरकारों पे है, राज्य सरकार अगर सपोर्ट करे तभी जाके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ पाएंगे। 85 क्वेश्चन नंबर 85 प्रश्न संख्या 85 माननीय मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मी समाजातील अतिशय गरीब लोकांचा प्रश्न आपल्या माध्यमातून मी सामाजिक न्याय मंत्र्याला विचारू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाच्या अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ असेल, इंदिरा गांधी निवृत्त असेल, इंदिरा गांधी या योजनेच्या माध्यमातून जी मदत आपण त्या लोकांना करतो, निराधार लोकांना, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक अट आहे उत्पन्नाची। 1980 साली ही योजना तयार झाल्याच्या नंतर आज 2023 उजाडले, जवळपास 43 वर्षामध्ये वार्षिक उत्पन्नाची अट ही 21,000 रुपये त्या ठिकाणी ठेवली गेली आहे। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सामाजिक न्याय मंत्र्याला विचारू इच्छितो की आपण नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 1 लाखावरनं 8 लाखावर केली, आपण इन्कम टॅक्सचे स्लॅब त्या ठिकाणी बदलले। अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की 21,000 रुपयाची जी उत्पन्नाची वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे ती मर्यादा वाढवून 1 लाख रुपयापर्यंत उत्पन्नाची अट त्या ठिकाणी देतील का, जेणेकरून जे पात्र लाभार्थी आहेत, ज्यांना खरंच या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, त्या लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल। कारण ग्रामीण भागामध्ये तलाठी त्या ठिकाणी या योजनेला त्या ठिकाणी 21,000च्या आत उत्पन्नाची अट देत नाही। स्पीकर साहब, मेरा इंटरप्रिटेशन काम नहीं कर रहा, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य ने क्या पूछा है। और मेरा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, हिंदी में पूछ रहे हैं। मैं हिंदी में पूछता हूँ। 1 सेकंड में पूछ लो। सर, इस प्रश्न के माध्यम से मैं समाज के गरीब और पिछड़े एवं निराधार वयस्कों के बारे में सामाजिक न्याय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 1980 में तत्कालीन सरकार द्वारा योजना बनाई गई थी। इस योजना में पात्र होने का लाभार्थी का जो मापदंड था वो वार्षिक उत्पन्न की मर्यादा 21,000 के अंदर रहना चाहिए, ऐसा मापदंड 1980 में तय किया गया था। जो मापदंड 43 इयर्स के बाद यानी 43 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही है। इसके कारण जो गरीब लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ लेना है वो लोग भी इस मापदंड के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि 21,000 रुपए का जो ये वार्षिक उत्पन्न का जो मापदंड है वो बदल के 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा क्या? जनाब स्पीकर साहब, प्लानिंग कमीशन ये तय करा करती थी कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जिस चीज के ऊपर ये आधारित करती थी वो था पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो आज के दिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भारत सरकार के तरफ से अनुमत हो चुका है वो 11 और 12 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने स्वीकार किया हुआ है, और उसके आधार के ऊपर मौजूदा तौर के ऊपर आज के दिन देश के अंदर 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर इसकी संख्या 197.9 करोड़ है। तो ये आज के दिन हमारा आधार है जिसके ऊपर पॉवर्टी डिसाइड करी जाती है। सन 80 में क्या हुआ उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौजूदा तौर के ऊपर जो 11 और 12 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके तहत पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी जा रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज। सर दूसरा सवाल ये है सर, बैठिए। सेकंड सप्लीमेंट्री सर दूसरा सवाल ये है सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ति वेतन योजना, इस योजना के माध्यम से जो लाभ उन गरीब लोगों को दिया जाता है, निराधार बोल के, वृद्ध बोल के, उनको कोई पैसे कमाने का माध्यम नहीं बोल के, जो इसमें दी जाने वाली राशि है वो बहुत ही कम है। मुझे लगता है खाली 1,000 रुपए एक महीने का हम उनको इस योजना के माध्यम से देते हैं। ये राशि बहुत कम है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि इस राशि को बढ़ाकर आप 5,000 रुपए करेंगे क्या? भारत सरकार की ये क्वेश्चन पॉवर्टी के ऊपर है, किसकी स्कीम पहले बनाई गई है उसके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है। मौजूदा सरकार आज के दिन अनेक ऐसी स्कीम्स चला रही हैं जिसके माध्यम से पॉवर्टी का एलिवेशन हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के अकेले के अंदर 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलजीबी कनेक्शन लगाए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन के अंदर 220 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए हैं। पीएम जल धन बैंक अकाउंट के तहत 37 बिलियन आठ किए गए हैं। तो इस तरह से जो मौजूदा पॉवर्टी की जो मौजूदा स्थिति है जैन साहब, पॉवर्टी की मौजूदा स्थिति पहले की बनिस्बत बेहतरीन हुई है इस सरकार के दौरान। प्रश्नकाल समाप्त प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार नहीं किया। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री अजय भट्ट जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against the name of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji at serial number 2 in today's revised list of business. Item number 3, Rav Indrajit Singh Ji. Item number 3, please. Item number 3. हाँ देख रहा हूँ, दे रहा हूँ यार।
Speaker, sir, rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Item number 4, Dr. Jitendra Singh ji. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 4 पे अपने नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Item number 5, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Item number 6, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं मेरे साथी अश्विनी कुमार चौबे जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 6 पर अंकित है आज की संशोधित कार्यसूची में आपकी अनुमति से सभा पटल पर। Item number 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज सभा पटल पे रखता हूँ। Item number 8, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरे साथी श्री दान राव साहब के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 9, साध्वी निरंजन ज्योति जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। Item number 10, डॉक्टर संजीव बालियान जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 11, श्री पंकज चौधरी जी। सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 12, श्रीमती अनुप्रिया सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 12 में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सदन के पटल पे रखती हूँ। Item number 13, श्री राजीव चंद्रशेखर जी। To lay the papers listed against my name at serial number 13 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 14, श्रीमती दर्शना जरदोश जी। Your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name, serial number 14 of the Ministry of Railways and Textiles, as per the today's revised list of business. Item number 15, श्री सोम प्रकाश जी। Inspector sir, with your kind permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 15 in the revised list of business for today. Thank you. Item number 16, श्री देव सिंह चौहान जी। Honorable sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 16 in today's revised list of business. Item number 17, Mahasachiv ji. Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding election of one member to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. I am further to inform that Shri Shambhu Sharan Patel, member Rajya Sabha, has been duly elected to the said committee. Item number 18, Shri Rajesh Sharma ji. धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरणों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 19, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 18 पर मेरे नाम पर उल्लेखित वक्तव्य लोकसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। 20, श्रीमती दर्शना जरदोश जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of the implementation of the recommendations contained in the 31st report of the Standing Committee on Labor, Textile and Skill Development on the demand for grants 2022-2023 pertaining to the Ministry of Textiles. Item number 21, श्री गिरीश बापट जी। श्री निहाल चंद चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 311 और उपनियम 1 के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए मैं अपने में से
30 सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए आपसे आगे चाहता हूँ। प्रश्न है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 22, श्री अधीर चौधरी जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्यसभा से ये सिफारिश करे कि राज्यसभा 1 मई 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने और सहमत हो और राज्यसभा द्वारा जथा नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। नमस्कार। प्रश्न है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 23, श्री अधीर चौधरी जी। अधीरदा। Sir, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure. And conduct of business in Lok Sabha. 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2023. And You are repeating, Adhirda, you are repeating the same. आप 23 कीजिए। हाँ सर 22 किया, 25 क्या मिला है? नहीं 23 है आपका। करते एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट। उसको मत लीजिए कार्रवाई में। 22 जो रिपीट हुआ सर, that this house to recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from the Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House. Again, sir, ये 23 है सर। तो आप ठीक है, ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, इट्स ओके। To associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on 1st May 2023 and ending on 30th April 2024, and to communicate to this House the names of the members so nominated by the Rajya Sabha. आज उनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखिए कि उनकी संपत्ति स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। The leader, तो मैं देखिए ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सर एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, हर बार नहीं, Mr. Chidambaram, please, no, while sitting you are speaking not good, sir. I have a request to make to the leader of the opposition, sir. Every time your member rises, you are a very senior member. Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. So, sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP.
सर देखिए डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ग्रुप में 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर, 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर, अगर यहाँ ऑथेंटिकेट ये तो है नहीं सर सर it will have to be authenticated. No. नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए हाँ सॉरी 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के सर what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है। Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है। Now do it, authenticate it. Yes. देखिए और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदी। वो अब भाषणों में चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, ऐसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना। ठीक तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे। चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, और पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे बीएसएनएल हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स
या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे 30 लाख वैकेंसीज है। 30 लाख में 30 लाख तो 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, एससी को, एसटी को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते शायद, उसी में आते शायद, ये बैकवर्ड्स में, ओबीसी में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10 लाख और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे, और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और एश्योर्ड जॉब जो लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे, और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना, प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। One second, please take your seat. One second. India has robust mechanism where how people get contracts. One second. No. Honorable LOP. No. One second. Take your seat. No. We cannot send a signal. India. No. We cannot allow. Mr. Chidambaram, you know it more than anyone else. We have a transparent, accountable, robust mechanism. I am only cautioning the LOP. He is trying to give an impression that India is a country where contracts can be given like this. No, contracts are given on the basis of accountability and mechanism. No, I know the rules are such. LOP will bear this in mind. No. Take your seat. You are a senior member. The others do it are very senior. One second. No. Take your seat. Okay. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I have got input. From very senior quarters in the country and outside the country. The parliament should not be allowed to be used to run down our transparent, accountable, robust mechanism. No, LOP said as if something has been given on a plate. No, take your seat. LOP. Honorable Chair, give me a minute. Honorable Chair, the opposition is trying to allege that the chair should not have made these comments. I would like to point out to the honorable leader of the opposition and his other colleagues that the chair. Honorable Chairman, I would like to urge the honorable leader of the opposition and his other colleagues that the chair is duty bound to protect the dignity of India. The chair is duty bound to ensure that national interests
is not compromised. This is the Council of States. If any member makes a comment which insinuates, and I have the definition of insinuation, if he makes a comment which insinuates. Sir, you cannot reply. Please take your seat. Take your seat. Yes, sir. You reply. You reply. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, take your seat. We have to say from this platform only that which is in national interest. No. Authenticated. It can't be allegation without substantiated. No. LOP. LOP. Shri Mallikarjun Kharge, please. Yes, I'll tell you. One second. Ask them to take the seat. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Ask your members to take their seats and please. Yes. Sir, you cannot reply. I'll tell you. You take your seat, I'll tell you what you have said. Please, take your seat. Take your seat. No. Please take your seat. Take your seat. Yes, go ahead. Mr. Mallikarjun Kharge. Mr. Mallikarjun Kharge. Not appropriate. Objection. Tell him. Mr. Mallikarjun Kharge, please resume your address. Please. Take your seat. Take your seat, Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Why I said so? An impression was explicitly given by the leader of the opposition that the largest democracy on earth is giving context like this. No. Not the context. No. LOP. Please, LOP. Leader of the opposition. Yes. Sir? Yes. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Please. Sir, I beg of you. I differ with your opinion. Yes. If I speak truth, it is anti-national. Sir. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. I am a Bhumiputra. I have not come from Afghanistan or from Germany or from other countries. I am native of this man. I am Mool Bharati. And you don't try to suppress me, my feeling. You are looting the country and you are telling I am anti-national. You are looting the country. Sit down. Mr. Kharge? Yes. One second. I am Kharge. I said Mr., not Kharge. Mr. We greatly appreciate you are a patriot. All of us are. There is no one here who is not a patriot. Number one. Number two, it is for the first time with a man of such experience and you are unable to control them when they are violating the chair. No. I will not yield on this point. No. Let me tell you. One second.
I am neither this side nor this side. I am on the side of Constitution. I am not on this or that side. I can't be on this state. No, Mr. Khadge, please. Mr. Khadge. And sir. मेरा रिक्वेस्ट Sir. Rarely speaks. Is the House of Commons dictum. Chair rarely speaks. Sir, every time you go outside, there is enough in our country to learn. You go to House of Commons. सर ये सारी ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये पूरा भार 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा, हिडन पर जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे, गले में माला डालेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतिम सेवा का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता। इश्यू पे कोई तत्व दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे मुझे मालूम बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाए। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नको मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर। साहब वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा,
आप सदन को नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, ये हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, अब गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरे नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगा। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. Yes. I had contact with you there. सर, अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं पैसे, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, ये मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है, ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आया। तो बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला
तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इसमें पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. ऑथेंटिकेट कितना सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके वो ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? One second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. उसमें One second. क्लीन होकर निकलते हैं, वो उधर One बैठ second. जाते हैं। One second. बैठ कर- One second. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठो। Request कर रहा हूँ. Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. I can understand. Sit down. Shakti Singh, use your Shakti later on. That's it. What have I done? No. I tell you. No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But. One second. But I am there. I will have to ensure. No. One second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. What? Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. सर, Ask him. आप देखिए, नहीं, आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं, और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे, इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है।
बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राज धर्म का पालन नहीं हो। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी। सर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, सर लीडर ऑफ द हाउस। सर मैं भी बहुत दिक्कत रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में देखा था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के कोने कोने में बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी, उसको वो जाहिर कर रहे हैं। LOP. Yes, Honorable Finance Minister. Sir, if you allow me 1 Yes, minute, please. I fully appreciate Leader of the Opposition quoting Shri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish he quotes him fully. That sentence ends, that paragraph ends with Shri Atal Bihari Vajpayee saying, यही तो राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं। One second. Since a reference has been made, to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. 1 more minute, sir. Honorable Finance Minister. 1 more minute, sir. Huh? 1 more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part straight. Honorable Finance Minister. For having quoted. For having. The chair has called me. The chair has called me. The chair has called me. For having quoted partly to suit their convenience, they should also, after I corroborate and read that statement here, give a word of apology. It will. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee ji was a former Prime Minister, Bharat Ratna, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited,
or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat, take your seat, take your seat. Yes. Yes. सर मैं मेरे मुंह से नहीं, ये 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला। No sir, newspaper reports are no substitute to documentation. सब You have to authenticate what is said. सर अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई है और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती है, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब, आप हेल्थ कमेटी के Honorable LOP, 15 minutes of your party time is left. You can use it. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है क्या? नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहां चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकारी थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। सर मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और इन सारे चीजों में। और यूपीए की आप बात नहीं करते हो, जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को, 130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ युवाओं, मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? कहाँ है? ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए,
50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात पूरा टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया, 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही, और सॉरी 15 लाख को तो बहुत हो गया। फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोले। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ। कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है, Not your level, sir. और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। Not your level, sir. Not your level. Not your level. सर, और एक सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, हिंदी बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो इसीलिए साहब अग्निवीर आपका फेल। और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वही बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो जीएसटी कम देते हैं, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी बात बहुत है, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, एससी, एसटी, ओबीसी, और यहां तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम, सब बंद हो गए। अरे एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो हमेशा बंद रहते हो, रहो वहीं पर। उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, तो आप किसी वजह से बंधे हुए बने। और दूसरी बात, और सब पैरा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है। 41% टीचिंग पोस्ट खाली है, 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए?
तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका। और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए। एलओपी सर, एक टाइम है कि पूरे नेशनल असेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूं किसी बात। इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलने दो, बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाए, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार है सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए विश्राम लेता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। और एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा साहब हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनंती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। श्री जवाहर सरकार
Mr. Chairman, sir, thank you very much for giving me the honor of speaking on the President's address. The President's address is mooted on one concept of Amrit Kal, we have noticed. So I would like to know from you, sir, and from our other friends, what is this Amrit Kal? Amrit Kal hai kya? Have we crossed Achhe Din? Have we crossed Achhe Din? Or are we still to reach Achhe Din? Year after year, sir, these terms are invented. These terms are invented like Amrit Kal, Azadi Ke Mahotsav, Amrit Mahotsav. ये आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे दो शब्द कहना है कि we were very glad to see those whose genetic ancestors, whose political ancestors did not take part in the Azadi freedom struggle, were celebrating, were condoning, were making. Please, House in order. Please, sir, please. Mr. Nasir Hussain, please go back to your seat. Please, House to be in order. Thank you, sir. As I was saying, Azadi Ka Amrit Mahotsav became a celebration for the atonement of those who had not participated in India's freedom struggle. Those who had not. If you want, I can produce those documents. Now, talking of the other one, Achhe Din, please. भाई साहब, बात करने दीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं आपसे, माननीय, प्लीज सर, कृपया सदन में शांति बना रखें। माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय जयराम रमेश जी, प्लीज। हाँ sir, I hope this time is not deducted from my very limited account. Now, we were talking about Achhe Din, Amrit Kal, we were talking about Azadi Ki Amrit Mahotsav. These terms are invented every now and then to distract attention. As I said, Azadi Ki Amrit Mahotsav was celebration, was an atonement by those who did not take part in the national freedom struggle. Aage badhiye, Achhe Din. Sir, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the House. There was another promise that was repeated and repeated over the social media and the IT cell of a particular party, that we are heading to a $5 trillion economy and that will be complete by 15th August 2022. Sir, we were nowhere near the $5 trillion economy. We were promised that we will ride the bullet train on 15th August 2022. Sir, only 25% of the work is complete. We were told that there will be electricity in every house on a 24/7 basis by the 15th of August 2022. Whether it has happened or not, I leave it to the House. We were promised that Indian astronauts will be up there in space by that date. I started looking up, but I couldn't find any Indian astronaut. I don't know whether these are promises, whether these are Achhe Din, whether these are part of Amrit. Somebody called them, from their party, called them Jumla. Now, this biggest Jumla was, as you know, that 15 lakhs in everybody's pocket. That is nowhere in the scene. Nowhere has it happened. But the movie that was opposed, Pathan, that represents the essence of plurality, that represents the essence of our oneness, has won through, has secured record earnings. Maybe the 15 lakhs will come from there. Sir, we believe in multiculturalism. We believe in multi-regionalism, looking at the smallest regions. Sir, one appeal that I make on behalf of my party and on behalf of the neglected people of Meghalaya is that Garo and Khasi be placed in the 8th schedule of the Constitution. An official request has been made, I repeat it. Now, coming back to the President's address, I repeat, I draw sustenance from paras 9, 10, 13
where discussion has been centered on corruption. As you can guess, the most live issue of corruption now is about a particular conglomerate. Now, enough has been spoken about that issue, but the only thing that I would like to highlight is the role of the regulatory authorities. Sir, I have observed the regulatory authorities and the civil service, the way the regulatory authorities collapsed in the face of hard facts when Adani Green Energy's share value shot up by 5,500% in 2 years, 2.5 years. No regulator, SEBI, did look the other way around. At every point of time, the Reserve Bank has failed us. At every point of time during this economic scam, the DRI has failed us. Of course, DRI did take some steps, to be correct, but certainly not consummate with the steps that should have been taken. The most glaring example of missing in action was the Enforcement Directorate and the PMLA. They were so busy raiding the opposition that they didn't find time to look at one of the biggest scams in the history of India. Our party has supported the claim to send this to a JPC. There is no point in discussing it in the House, but we would go one step higher, sir, and we should place forward a demand for a Supreme Court monitored inquiry. A Supreme Court monitored inquiry, time bound, will be perhaps even a stronger way of ensuring that we are taken seriously. The whole House is taken seriously. Sir, this report mentions about poverty. But poverty, what poverty are you talking about? I mean, I'm unable to understand, because the entire basis is a report, that's the Consumer Expenditure Survey that was done last in 2011-12, before this government came, 11 years ago. In the last 11 years, or rather 9 years of this government, they did not undertake any consumer expenditure survey. One report that came out in 17-18, they took it off the website because it showed an uncharitable picture of this government. We repeat that the final consumer expenditure survey that is finally happening should be put out in the public domain as soon as possible, so we know whether India's poor constitute 8 crores or more. Sir, the Prime Minister and others have said with a lot of pride that we have been giving free food to 81 crores. 81 crores Hindustanis are lining up for free food grades, and nobody can remove it now. Does it mean that 81 crores out of 240 crores are poor? You revise your lines of poverty. You revise your norms of poverty. But come forward with facts. Come forward with facts. And in tackling poverty, as everyone knows, it's popular schemes like Narega and others that help. But Narega has been slashed from 111 crores to 89 crores last year, and to 60 crores. And out of this, West Bengal has been selected out maliciously for complete stoppage of Narega. You should come to Bengal to see how welfare schemes are conducted. Without the success of such schemes, we could not have resisted the massive onslaught that was thrown at us in 2021. With all the power of state and all the wealth that was possible, the people of West Bengal rejected it with a 48% majority because of welfare schemes. Do take the trouble to come to Bengal for learning how to conduct welfare schemes. So one point I would like to draw the attention of my friends on both sides, that is, very soon we'll move to Parliament House, a new Parliament building. Not 1 minute's discussion has been held with the users of Parliament. I have some insight because for the last 1.5 years, I have been pursuing it with the minister concerned, who gives minister-type answers. Not one consultation has been held. We do not know what facilities are there. I inquired, they said, no, we don't have State Bank. Aapko State Bank ya banking ke liye bar whose building says building karna hai. This space has been utilized for grand halls
far beyond our requirement in the near future. And I see a plan behind these large halls. And you know that, sir. As it is, 50% of the members are outside in the lobby and doing their other important thing. So when the camera pans at this house, it looks half empty, as it is even now. But if the hall is made 1.5 times more, the TV camera will show that honorable MPs do not take the house seriously. It is part of the narrative that Parliament is not required. Parliament has to be belittled. And in one state, assembly, I'm talking of the state of Gujarat, assembly sittings were reduced to 29 days in a year. Our is some similar grand plan of belittling the legislature also on in the national parliament. Secondly, sir, why did we talk of consultation? It is not only facility. Look at the building. Look at the grandeur of this building that has lotuses, that has all Indian symbols all around. And you see that triangular buildings store. You won't get the same gravitas. You won't get the same splendor. There is, at every point of time, and aesthetics has been cast upon us. That will be, the aesthetic will remain as a permanent memory of poor art. And this has been done by an architect specially chosen from Gujarat, who's taking 250 crores. 250 crores for advising on a completely unaesthetic building. We come to health, sir, because that is another point that has been repeatedly mentioned. Ayushman Bharat has saved 80,000 crores. I have gone through the entire health expenditure budget and find this is almost 100% of the budget. Where do they give these figures from? Where do they obtain? If the officers are misleading them, then let them question, where do you get such figures? You talk of 9,000 kendras. Sir, one kendra for 155 lakh people. And you are mentioning that proudly in your report. 155 lakh people will go to one store. Sir, is par dimag lagaiye, koi na koi dimag lagaiye. Now. Sir, 1 minute more, because 1 minute more only. The total is, our health expenditure total is just 3.6% of the GDP. I couldn't help mentioning. And the Western world has 12 to 19%. China has 5.5%. Mexico has 6%. And we are half. We should hang our heads in collective shame that we have not been able to look after the health sector the way we should have looked after it. So I thank you for the time given. Thank you, Manya Jawahar Sarkar ji. Honorable N.R. Elango. Please. Honorable Deputy Chairman, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Honorable President's address. Sir, the special address of the Honorable President is to inform the Parliament of the causes of the summons as per Article 87 of the Constitution of India. It is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Sir, great Thiruvallur said, "Yeppurul ettanmayadu aginum, appurul meipurul kaanpadu arivu," which means the mark of wisdom is to see the reality behind everything. With that vision, when I saw the presidential address, I want to make some mention about 3 or 4 points. Democracy and federalism has been dealt in paragraph 79. And I quote, "India's democracy was prosperous, strong, and will continue to be stronger in the future." In para 79 it is said. Sir, the true federalism in real spirit and substance and not in ornamental form would be seed for vibrant democracy. Democracy have to be practiced, not to be preached, sir. Where all democracy has been violated, I can quote, "Union shall not attempt centralization and should envisage decentralization by permitting the states to exercise powers of legislation and executive. The representative of the union government in the state should act as a catalyst and their deeds should be
that deed should not be against the legislative democracy of the state. Delegation of power to state should be real, and colorable intervention by the union would be destructive of the constitutional mandate of federalism. However, states' contribution to the development in various fields should be recognized and appreciated by the union for the sustained cooperation and federalism between the union and states. Sir, for instance, Tamil Nadu government Legislative Assembly passed a bill on NEET, and it was sent to the assent of the president. But for the best reasons known to them, the bill is kept in the cold storage for a long time. That bill has not been approved, and various reasons are given by the union in not approving the bill. The governor of the state of Tamil Nadu is not giving his assent on most important bills of the state, namely banning of online lottery and certain bills which, with respect to the university. The assent neither denied nor returned, the bills are neither assented to or not returned to the Legislative Assembly, kept in the cold storage. This is not only happening in Tamil Nadu, sir. This is happening in Telangana, this is happening in Kerala. How then you talk about democracy and federalism? You have to practice democracy, not only preach the words. Sir, the judiciary is concerned. Fair and independent judiciary is the hallmark of the civilized society. And it's common knowledge that the law declared by the Honorable Supreme Court is the law of the land under Article 141 of the Constitution. Sir, Article 50 is given a complete go-by, and we are in the recent past hearing the highly placed executives are making certain remarks against the collegium system and the basic structure propounded by the Supreme Court. In fact, the basic structure is not propounded by the Supreme Court in Kesavananda Bharati. The basic structure is inbuilt in the Constitution. And making some observations about the judgments of the Supreme Court, we have to respect the judiciary, and that is not being done. Article 50 is being violated. That separation of power is being completely violated by this government. And sir, the collegium is concerned. Twice we passed the NJAC bill, and it was struck down by the Supreme Court by a recent judgment. If you have any objection to those judgments, you have to pass a new bill which can be acceptable by the Supreme Court. But making comments on the collegium system is not good for the democracy. And we are also saying that there is cherry picking in the appointment of judges. Collegium is recommending few names, and union government is cherry picking few names and passing the orders and keeping the other names under the cold storage without assigning any reason and without any authority to do that. This is very unacceptable in the democracy, sir. This have to be replied by the government. Sir, one more affront to the democracy is all these schemes by the union government are named in Hindi. We are not able to understand the name or the intention behind the schemes. With all this, I say the union government is not practicing the democracy. They are not governing with the democracy. As far as the corruption is concerned, at paragraph 9, it is said by the presidential address that an effective system has also been put in place to end practice of favoritism and corruption in the government machinery. Sir, you know, the people of India know that in 2018, this government has almost neutralized the corruption law. There are few provisions which were in vogue in 1988 Act. You have removed them and decriminalized most of the acts of the corruption. And naturally, corruption will come down, sir. Now, take 13(1)(d). There were two good provisions. The 13(1)(d) has been completely wiped off. And you say now the corruption has been brought down. Yesterday, when Mr. Tambidurai was speaking, he said about something, the cases which were ended up in acquittal. But it is only during the ADMK rule. Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, Kodinadu was also looted.
Please, please. It is not a state subject, sir. We'll see. Yes, please. We'll see. Right. We'll see. We'll see. We'll see. Please. Please, please. Sir, I have only 2 minutes. Please take your subject. Please speak on the subject. Sir, in You know he paragraph will not 2. be raising a state subject. Please. Yes. We'll see. We'll see. Please. Sir, in paragraph 2, the presidential address says about a Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. Everywhere they say Bharat when they are talking about the future. The discriminate use of the term Bharat vis-a-vis India stirs a speculation in the minds of the general public that a subtle design is envisaged by the Union to proclaim India in future as Bharat, which will prove to be fatal for the existence of the unity and diversity of this great nation, India. Sir, there is a Ekaleva model schools, about 400 has been opened. We are very happy to know about that Ekaleva model schools. I only hope and believe that this government, by not providing job opportunities to those students, taking the thumbs of those students like Dronacharya. They have to give job opportunities to them. Sir, while coming to the women empowerment, today in Tamil Nadu, our Honorable Chief Minister, Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin, is inaugurating the second phase of Pudumai Pen scheme, which is otherwise known as a modern girl or a revolutionary girl. Muvalo Ramamritam Ammayar Higher Education Assistance Scheme is being in vogue in Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu has launched this scheme to enhance the enrollment ratio of girls from government schools to higher education institutions. Through this scheme, the financial assistance of 100,000 rupees per month will be provided to the girls till their completion of UG degree, diploma, ITA, or any other recognized course. This incentive amount under this scheme will be dispersed directly into their students' account. This is called Dravidian model, which is better than any other model, sir. Such as socially progressive schemes have not been introduced by the union for the better and prosperous life of the girl children. 1 more minute, sir. Sir, as far as the observations of Prakash Javadekar yesterday, that the artifacts which are available in the other countries will be brought back to the India. I have a request to the government that a detailed report on Kiredi excavations has been submitted to the ASI on 30th of January 23. One more minute, sir. Please, Mr. Amarnath, I request the government to publish and make it a public document, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Manya Sanjay Singh, absent. Manya Manas Ranjan Mangraj. Manya Niranjan VC ji, please. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I stand here to support the motion of thanks on the speech delivered by the Honorable Vice President, Honorable President of India, the first tribal woman president, who is proud of tribals of India. However, I, on behalf of my party BJP for the development of tribals of Odisha, want to highlight some important issue concerned to my state of Odisha and demand attention of the central government on these important issues of Odisha. Firstly, inclusion of 169 tribal groups or parts of such tribes pertaining to Odisha, as recommended by our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. The left out scheduled tribe are Sora, Tamadia, Bhanjapurana, Kolanga, Paharia, Jhodia, Mankidia, Durua, Chuktia, Bhanja, Paudia, Bhanja, Amanatya, Beldargond, Budu Kandha, Budasabara, Bhakta, Boigodaba, Berenga, Jhodia, Paraja, Cherenga Kolo, Champua Kamaro. Such type of 100 of tribal communities. These communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variation of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefit availed by ST with similar tribal characteristics residing in different parts of the state, who have since been notified as ST. Inclusion of the left out communities will give them their
much needed recognition as scheduled tribe and ensure them social justice in accordance with the provision of the Constitution of India. Secondly, sir, withdrawal of 18% GST on candle leaf. Our Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, has been demanding to withdraw 18% GST on candle leaf in the greater interest of the state of Odisha, as more than 8 lakhs poor tribal people associated with the trade are getting affected. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Act 2006. The imposition of GST of 18% on candle leaf is adversely affecting the trade. This in turn